If we go back to how it started, like how the king must have envisioned it, like that is the time when all the men were usually a part of the army, and when actually we are talking about the charis, of the angacharis that is happening, those are all women oriented activities. So if we like had happened to have a time traveler device and we went to the time when the gurus were doing their research, what do you think they were thinking of in such a, like, to include the women activities in a form that primarily started from the men? See, our culture, India, if you see the deep history, the female were being actual freedom after they get liberty after the independence. That is, we have to accept it. This is our culture because the many prathas in Moreni. So women are not very much they have a liberty to do many things. So dance to bhuli jao. Dance to baat ki cheez aaya na. What happened actually in every style you see the many gurus are male. चाहे तो मोदी सी देखो कुछ भी देखोगा many things started from by male because सब लोग मेल ही करते थे. Even Chhau dance में भी this dance is always happened by the male. Even the female role will done by the male. Still the pratha is going on. But we are in metropolitan cities. We are in the 21st century. We cannot accept it. I can imagine how problematic that period where women were suffocated. They do activity, they want to do something, but they not get chances. Correct. Still, it is happening in deep areas. The women are not getting chances to the education to the dance. So, male style, yes, military are depend on the males, but it's not true. There is also female military persons. There are female armies. And why we talk female? But if we talk about Rani Jhansi, Raziana Sultana, Ma Durga, they all are Chandi. So ये सब में कहीं पे भी you cannot see what female, male and female क्या है? हम लोगों ने male female को gender में बांट दिया. Acrobatic या activity, acrobat and activity, it done by everyone. It's not कि ये सिर्फ लड़कों के लिए या लड़कों के लिए. वो तो we divide it in the culture. And if we keep same thing in this today scenario, the dance will be dead. Now times change. Many female is dancing in the classic. Now we inviting male, please learn this classical. Females are now males are feeling, frustrated. Why we do classical dance? That is the actual scenario going on. Because the society is changing every day. They have to work. डांस में तो कुछ होता नहीं है, अब हम डांस क्या करें? This is also a part of this thing. But I'm talking very very generous, very जो हो रहा है वो मैं बात कर रहा था. But you're talking about the quiet coming like this. Yeah. So that periods also females is also be regretted. But male एक domination था उस time. हर चीज में male लोग करते थे. So protection में भी male, आपको support के लिए male चाहिए. So they were in very much in the large number. Female quantity count. That's why it coming from that male style. And लोगों को लगता है ये सिर्फ मेल डोमिनेटेड है या मेल डांस कर सकते थे. सो मैं बस यही बोलता हूँ कि if this is something like that, then we have a two style in the same self dancing. We call the Kali Bhanga and Hatyar Dhara. Hatyar Dhara martial dance. Kali Bhanga एक पत्ता देखा ना, पत्ता जो पत्ता जो पेड़ का पत्ता होता है वो कितना सॉफ्ट होता है. कली पेड़ वो सॉफ्टनेस
लड़की को मानते हैं, सिर्फ हर लड़के को मानते हैं, सॉफ्टवेयर लड़की को मानते हैं, बट वी रिसर्च दिस थिंग इज इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। एक लास्य और एक तांडव, वो लड़के में भी होता है, लड़की में भी होता है। तो एग्जाम्पल में जब तांडव भाव की बात करेंगे तो हम मेल की बात नहीं करेंगे, मैं माँ दुर्गा की बात करूंगा, क्योंकि जब पूरी दुनिया में महिषासुर को मारने के लिए जब किसी कुछ आई थी तो वो माँ दुर्गा ही आई थी ना, कोई भगवान शिव नहीं आए थे उनको रोकने के लिए, वो भी मेल थे। तो वो एग्रेशन माँ दुर्गा ने लिया, तो वो तांडव भाव खत्म किया, उसको खत्म मारा। यहाँ पे आ गया आपका चेंज हो गया विजन, क्योंकि जब किसी चीज, जब कोई इंसान आप से बाहर हो जाता है तो वो ये नहीं देखता कि मैं सॉफ्ट हूँ या मैं हार्ड हूँ। आई हैव टू सेव टेरिटरी, है ना। उस टाइम तो सब लोग आ जाते हैं। अब कृष्णा, गीता उपदेश में कृष्णा एक मार्शल है, जहाँ पे वो क्षत्रिय की तरह बात कर रहे हैं। वही कृष्णा जब वो राज कर रहे हैं तो एकदम सॉफ्ट, लास्य लवंग पूरा, मतलब एक बिल्कुल आप समझ सकते किस तरीके से वो कितने प्यार से उन्होंने वो मूवमेंट बनाए हैं, इस तरीके से हम राज करते हैं सॉफ्टनेस के साथ। तो वो देखो चीजों को। तो ये सिर्फ हमारा नजरिया था, वो जब when it started it's all about from the men's, but when it developed in society many females were done, and now when it come to metropolitan cities we don't talk about this, है ना। जहाँ से वो चीजें ओरिजिन हुई है ये अभी भी वहां पर वैसे ही होती है, बट थिंग्स इज चेंजिंग राइट नाउ, इट्स ऑल कल्चर। सो कल्चर में तो चीजें, हमारी हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हुई हैं, वी कैन नॉट डिनाई दिस, एंड इसीलिए मेल ज्यादा आते थे, मेल ने शुरू भी किया था, और पर आज सब बराबर के साथ हर कोई कर सकता है। मैं भी चिल्ला सकता हूँ, कहते हैं ना, मैं एकदम अगर कोई चिल्लाने को मुझे दर्द होगा तो मैं चिल्लाऊंगा ना, मैं या एक्सप्रेस हो गया, मेरे भी आंसू आएंगे। ऐसा नहीं है कि मेल हो तो मैं रो नहीं सकता, मेरे भी आंसू आते हैं, मेरे को भी दर्द होता है। इसी तरीके की लड़की का भाव भी है, उसको भी गुस्सा आता है, वो हमेशा रोएगी, वो कुछ नहीं बोलेगी, वो भी जवाब देगी। तो आप यहाँ पे मेल फीमेल का तो होता ही नहीं है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लोगों को इस तरीके से जानना चाहिए। When they're talking about the male domination, female domination, there is no domination of anything. There is a culture domination. हम लोग जिससे बड़ा करते हैं आगे चीज वही बढ़ती जाती है ना। उस टाइम भी अगर थोड़ा एजुकेशन और अच्छा होता और इन चीजों में जैसे चीजों को लेके चलते, तो आज औरत को भी देख रहे होते कि औरत हमें सिखा रही होती उन चीजों को लेके। तो हम बात करते हैं आज जाके कि यार इस पे इतने लेडीज ने शुरू किया, लड़कों ने लड़के कब आए, हम चीजों को आंसर नहीं दे पाते, बट इट इज ऑल डिपेंड ऑन द कल्चर हिस्ट्री। Very well put.